Big news coming in. Remember, the past few weeks and months, we have seen these hoax calls come in specifically to the airlines. And now, according to our sources, at least 11 fake user profiles have been identified and flagged for spreading alarming messages. Central security agencies have been on a high alert. These are calls that are being made eventually, which haven't been corroborated on the ground because then there was no bomb on these airlines, but there are these threat calls that leads to intense and immediate security protocol that are then implemented. These are some of the earlier visuals on your screen when the calls had come. Remember, this heightens tensions. It disrupts operations and it puts a grave risk specifically for the passengers and the crew. Now, according to our sources from the agencies, the fake messages primarily originate from social media platform X. Investigators anticipate that there are more fake profiles that are coming up. Security agencies are coordinating with the social media platforms to trace the origin of these messages. But also passengers, airline operators have been urged to stay vigilant on these matters. Authorities emphasize that there is seriousness of social media vigilance also that's needed in national security. Remember, if these are prank calls or are these calls that possibly are testing waters, but it cannot be taken lightly at any time, and therefore even one message gets into an emergency situation, but that's what then the vigilance for social media also comes in. Let me go across to my colleague Jitendra Bahadur, getting us all these information from our sources with the agencies. Jitendra, ये बताइए, क्योंकि ये ऐसा कोई भी मैसेज हो जो लाइटली तो नहीं लिया जा सकता, तो किस तरह से इसको सेंट्रल एजेंसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ एक कोलैबोरेशन में रखकर इंश्योर करेगी कि कोई फेक प्रोफाइल बनाकर इस तरह की धमकियां ना दे पाए? देखिए पूजा, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा गया है कि एयरलाइंस को बॉम्ब थ्रेट कॉल्स आ रही है, उसको लेकर के गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक कुछ दिन पहले की गई थी, जिसमें सीआईएसएफ के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज के जो अधिकारी हैं, इसके साथ ही आईबी के जो अधिकारी हैं, वो तमाम लोग इस बैठक में मौजूद थे। ये निर्णय लिया गया कि जो भी इस तरीके के फेक कॉल्स आ रहे हैं, हॉक्स कॉल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और कहां से इसकी ओरिजिन है, उसको लेकर के बड़े स्तर पर छानबीन इस वक्त की जा रही है। सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी है कि एमएचए का जो साइबर विंग है, वहां से इसकी छानबीन लगातार की जा रही है। I4C विंग, उसमें तमाम अधिकारियों को इस बात को लेकर के जानकारी दिया गया और कहा गया है कि जो एक्स पर इस तरीके से थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, उनकी छानबीन किया जाए। इसके साथ ही कॉल्स के साथ साथ जो ईमेल के जरिए भी थ्रेट कॉल्स अलग अलग एयरलाइंस को आ रही हैं, उसकी जानकारी पूरी तरीके से हासिल की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी बहुत सारी एयरलाइंस हैं जिनकी तरफ से इस तरीके के लिए कदम बढ़ाया गया। एजेंसीज से भी बातचीत किया है और बातचीत करने के बाद उन्होंने विस्तृत जानकारी उनको दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ऐसी थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, उसको लेकर के एक बड़ा टीम गठित किया जाएगा, जिसमें I4C विंग के साथ साथ जो सर्टिन है उसको भी शामिल किया जाएगा और उसके बाद जहां से ऐसी थ्रेट कॉल्स की ओरिजिन हो रही है, उनको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ उनके खिलाफ अगर ये पता चलता है तो पुलिस के जरिए कार्रवाई भी की जा रही। तो इस तरीके के बड़े कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं ऐसे थ्रेट कॉल्स को लेकर के। और पिछले हमने देखा कि 5 से 6 दिनों में 150 से ज्यादा थ्रेट कॉल्स आ चुकी हैं। कल ही 43 के आसपास एयरलाइंस को थ्रेट कॉल्स मिली थी, जिसको लेकर के And not just airlines, Jitendra, even remember the schools. In a series of calls and emails that had come to schools across Delhi NCR and other states as well. So this is absolutely concerning because why is someone or a group trying to put forth these fake calls? And importantly, because even one call or a message cannot be taken lightly. There's a reason that immediately there are emergency situations that are implemented, protocols have to be followed, because even if one call happens to be correct, it can mean disastrous for not just passengers mid-air, but also for students going to school, children, families, innocent people. Is someone just doing it for fun, or is there more a sinister plan at play? And that's one of the reasons that authorities are also emphasizing the vigilance on social media with regard to national security and trying to find out the origin. And I'm sure that will happen very soon, and we'll be able to find out where is it coming from and why.